Hello and welcome to the Habit Coach podcast. I'm Ashdin Doctor, your habit coach, and today with us we're going to be talking about skipping. That's right, skipping, something that I have been programmed in my brain since childhood that I can't do it. So today we have a world champion with us. We have Chetan Tambe, who's going to talk to us not just about skipping but his entire journey so far. So Chetan, welcome to the Habit Coach podcast. Thank you so much for having me over here, and I'm very happy to be here actually. This is your For the first first podcast, time. right? Yeah, for the first Fantastic. time. So welcome. Yeah. Chetan, tell the listeners a little bit about yourself. So my name is Chetan Tambe, and I do karate, skipping, and archery, rope skipping and archery, 3 sports as a main sports, and I've been doing this from past around 16 years now. So it's a long journey though, and I'm still 16 enjoying years it. you're doing this. Yeah. So what age did you start? When I was in first standard, so I guess 5, 6. 5, 6. Yeah. And you started with what? Karate. Karate. I've started with karate. You were forced into it, like parents pushed Yeah, you into apparently. it. Matlab, how did it go? Do you remember? My dad always wanted me to learn karate, like to be a beast, basically. To be a And- beast? Yeah, Huh. to be a beast. For just do maramari and stuff. But That- because that was his goal in life? yeah, or- his goal in life. Because there were some people in the village area, the fights and all. They're like, मुझे मेरे बच्चे को ऐसा strong बनाना है. Okay. So he took me to the karate classes. He put me over there, and the sir was so brutal. He didn't do anything in the first year. Like when I was in first standard, he didn't do anything. Then second standard mein, he started hitting. Like karate ka. And abhi ka karate is very commercial, to be honest. Correct. Very commercial. You give money, you'll get the belt, and that's it. When I was doing karate, it was like you have to be that, that person to hold that belt, that color. You have to deserve it. You deserve it, exactly. So he used to, he was around, I'll just tell you one incident. When I was in 7th, 8th standard, so my core was strong, but to do that, my sir was 107 kgs, okay? And he used 107, 107 kgs. 107 kgs, yeah. So we used to lie down, and he used to jump on our stomach, My God. on one leg. Wow. So if you hit me now in my stomach, it doesn't happen. Like nothing will happen to me. It's like that. So we have done some stunts like bullet passing through my stomach, or on my stomach and all stuff. So everything was there. Bullet bike. Yeah, bike. Huh. Obviously bike. Or I'll die. It's like, wow, let's see how that works. Yeah. So this was Bike. karate, where it was in Bombay, this was somewhere else? Yeah, Bombay, in Jogeshwari. In Jogeshwari. Yeah. You started with the karate part. And what made you continue karate? When I started winning the medals, and everybody in the school were like, "Arey Chetan, तेरा medal है, कैसा लाया, कहाँ से लाया?" And everybody's like, "Arey Chetan, sports person Chetan." That's it. So hype was pretty good. So it became like an identity. Like Exactly. Chetan is Sports in person, sports, yeah. in winning the medals. And Exactly. what was your first medal? Do you remember your first competition? No. Prabodhan maybe. Prabodhan Goregaon. Okay. So I guess, yeah, that's my first medal. Very first medal. And matlab, you got a taste for victory out there. So Yeah. Victory ka taste to when I was in the, what we call primary, secondary, that kid section. I did that dance where, the people who have this thing and they, Whips. yeah, and they hit it themselves. So, wo dance I did, and I won gold in that dance. So, wahan se hi fir, it's like, chalo, yahi Chetan, karna hai. dude, you saw gold, and after that it was, मुझे gold ही चाहिए. Silver, bronze, कुछ नहीं चलेगा. नहीं, कुछ नहीं चलेगा. So this winning mindset now, right after, like you said, 16 years, right? You've been doing this 16 years. Do you still have that same arg when it comes to winning as you did earlier? Not exactly, because right now I'm coaching more than 200 students from Mumbai, and online to more than 100. So Correct. it's like abhi coaching thoda zyada hai when people call you sir and that. So I'm like, now I want to make them mere aisa. So it's just that. So what has winning as a mindset changed in for you? So earlier on it was winning gold medals. Has it Yeah. turned into something else? Has it morphed into something? I guess sports के लिए प्यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया. जैसे जितना medal ज़्यादा आया, like मुझे यही करना है. And I want to, if I'm doing this for past 16 years, मुझे इसके अंदर ही career करना है. I don't want to do anything else. Okay. So it's like that. Have you done a job in a company ever or done? No. So you started coaching and I started coaching when I was in 9th standard. damn. Okay, Yeah. so you've been doing this and coaching. My dad
doesn't like skipping till now. He just hate it. He's just like, go do some job in the bank or stuff. और कुछ What नहीं is this चाहिए. skipping, whipping? Exactly, the लड़कियों का खेल and all. But then when I was in 9th standard, I started coaching. When I was in 11th, so तभी obviously पैसा चाहिए. College आ गया है, खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए. घर से मांग नहीं सकता हूँ. Then my mom knows that I'm going in a school. There's a school, Shri Ram High School in Andheri West. Okay. So मैं वहाँ पे सुबह 7 बजे पहुँचता था, 12 बजे तक क्लास लेता था. तब तो कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता और फिर घर आ जाता था. So my mummy knows कि हाँ मैं क्लास लेने जा रहा हूँ. But पप्पा के लिए I was going college. Going to college. Yeah, so I did that for 5 years. 15 तक I just did it. फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि मुझे यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है. सो ही आस्क्ड मी कि विल यू अर्न अच्छे से, ये वो. बोला पता नहीं, बट मुझे नहीं करना है. दैट 8 घंटे का जॉब आई कांट डू. Karate, right? Yeah. You started with that. Then when did the others come in? When did Archie come in? When did First skipping standard come in? karate, 4th standard skipping I started. Then so how did skipping come into your life? Subhash sir came, he just showed me a video and then I was like कि तो इसका क्या करे. Like वीडियो दिखाया तो सही, पर क्या करे इसका. अपने इधर तो मार देंगे कोई लड़कियों वाला गेम खेलूंगा तो. Correct. तो एवरीबडी वाज लाइक अपन इसको करेंगे आगे. एक एसोसिएशन बन रहा है मुंबई में, उसके थ्रू अपन नेशनल गेम खेलेंगे. बोला ठीक है चलो खेल लेते हैं. तो वी स्टार्टेड ऑन आवर ओन, मी एंड जगन्नाथ. हम दोनों मुंबई के, महाराष्ट्र के बेस्ट प्लेयर्स हैं, मी एंड जगन्नाथ. सो हम लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करना चालू किया. इफ विल सी माई नोज, इट्स यहाँ पे ब्रेक हो चुका है. वाइल डूइंग बैक फ्लिप आई जस्ट फेल डाउन ऑन द टेबल. सो हम लोगों ने खुद ही सब सीखा अब तक. कोई कोच नहीं था. No. This is 6th, 7th standard. Okay. Everything happened in 7th, 8th, 7th 9th. standard. Yeah. That is the worst part. तो फिर we started doing that. फिर बाद में हम लोग अराउंड फिर से 4 साल हो गया हम लोग कर रहे हैं. हम लोग ऐसा खुद को बहुत बड़े समझने लग गए, क्योंकि सिर्फ हमको ही आ रहा था और किसी को कुछ आ नहीं रहा था. और हम लोग दूसरों को सिखा रहे थे पर वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे. फिर बाद में हम जब इंटरनेशनल खेलने गए तो हमें ऐसा लगा कि हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे. Like we're doing 10% of it. And the people from outside India, they're like बस खेल रहे हैं, they're enjoying it. And उन लोग उन लोगों को सपोर्ट करते हैं obviously. यहाँ पे वैसा नहीं चलता है. Correct. So फिर वो हो गया. फिर we came मुंबई अगेन. हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस वहाँ पे ऑलरेडी शूट कर लिया था. फिर हम लोगों ने in abroad? Yeah. Germany it was. तो हम लोगों ने, this was your first trip to? Yeah, first trip was Germany. फिर वो कर लिया. फिर हम लोगों ने शूट वगैरह चालू कर, मतलब प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, शूट्स वगैरह चालू कर दिया, ताकि हम लोग को समझे कि हम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं. सो वी स्टार्टेड दैट. फिर वहाँ से चालू हो गया कि अभी यही करना है बस. दिस इज व्हाट वी एंजॉय. यस. उसमें भी आर्चरी का एक पार्ट हुआ था, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली. मैं आर्चरी करने लग गया था एंड मैं कराटे और स्किपिंग का मेन प्लेयर हूँ. तो आर्चरी मुझे सर सिर्फ हम लोग के कॉम्पिटिशन में थोड़ा गर्दी बढ़ाने के लिए ना कि जा एक बार खेल ले करके. तो आई वेंट देयर. और मेरे सर का सुभाष सर का बेटा विनायक, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. लाइक हम लोग भाई जितना अच्छे. तो फिर हम लोग कंपटीशन खेल रहे हैं और मेरे लिए बो हमेशा कहीं से ना कहीं से एक बो आ जाता है एंड आई विल जस्ट कीप शूटिंग इट. तो एक दिन पहले प्रैक्टिस करूँगा और कंपटीशन में जाके मेडल आ जाता है. वैसा था. तो एक ऐसा हुआ एक टाइम पे कि हर बार मुझे अलग कैटेगरी में डालते थे, पर इस बार विनय के कैटेगरी में डाल दिया. एंड विनय इज़ अ गुड प्लेयर. वो गोल्ड मारता है हमेशा. बट अपेरेंटली मैं जीत गया. वाओ. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सर केम टू मी, ही सेड तेरा गेम कराटे एंड स्किपिंग है, आर्चरी में मत घुस. एकदम ऐसा रूडली, एकदम ऐसा टशन के साथ. सो फिर वहाँ से मैंने आर्चरी छोड़ दिया. वहाँ से लाइक ठीक है मुझे नहीं करना है. करेक्ट. दैट कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी रेलेवेंट. द अदर स्टफ इज, आई थिंक relationships are far more important. Exactly. at that. Then I stopped the archery thing. So skipping. Now most of us know skipping as warm-up exercise before you do your gym. Exactly. What is skipping at a competition level? Matlab, how is that different from what we do? So normal skipping is the simple jumps plus running steps. That is it. And the other things we used to do in childhood. So यहाँ पे skipping is like you have 30 seconds and you have to do maximum simple jumps or joggers, we can say, running step in 30 seconds. So the national record is 110 in 30 seconds. That is doubles of it, like 204. So that's the national record. So in left, 30 right seconds. feet, that way. Yeah. So it's 204 in 30 seconds. 30 seconds. And I can do 84 in 31 leg, 84. So uska double. 160. Yeah. So I can do that. And the international score is 130. 130. Yeah, Wow. in 30 seconds, one leg.
So it's massive. And then there comes freestyle. But what is it? So the speed that is there in their feet. Yeah. That's what you're looking at. Yeah. जो हम लोगों ने जब start किया था तो international हम लोग जब गए थे तब we saw कि they use the wired rope, which is the पूरा iron वाला rod वाला rope. Then we were like कि अपने पास तो है नहीं यहाँ पे कैसा create करें. तो मी एंड जगन्नाथ वेंट टू जो मैकेनिक का जो स्टोर्स रहता है वहाँ पे एंड वी टुक द रिक्शा का क्लच वायर ब्रेक वायर और क्लच वायर एंड वहाँ से हमने वो रोप बनाया एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड हम लोग का स्कोर जो 30 जा रहा था इट वेंट टू 70-80 फैंटास्टिक विद दैट रोप एंड फिर उसमें हम लोग को वो रोप के ऊपर कोटिंग नहीं था तो जैसे ही वो फ्लोर गंदा आता था कटता था तो वायर्स निकलता था वो ब्लीडिंग पूरा खून हो जाता था बट इट वाज फन लाइक स्ट्रगल वाला पार्ट इफ यू सी तो it's very awesome. So one is speed. Yeah. What are there multiple competition things? Yeah, the 4 master events are there. So one you have to do 30-second speed. One is you have to do 30-second double unders. Okay. In one jump, what is the max double unders? Mine. And international? Mine is 90 in 30 seconds and international it's 99 or 100. Okay. That's it. Yeah. And then the third one is triple under. In one jump, the rope should go thrice. Thrice, wow. Yeah, and there is no time limit. You can do maximum you can. So I have done 250. Till you make a mistake. Yeah, you have to. If you get stuck, you're out. That's it. That's the rule. So you have to keep going. Ekdam calmly aisa. And the main part is if you're doing in center, everybody's looking at you and you're like everybody's cheering up and sab log ruk chuke. Like you have the competitors, right? Correct. They'll stop, like वो अटक जाते तो they'll sit और बस everybody's looking at you and then you have to complete your goal. Wow. So that is it. The pressure is. Yeah, the pressure. We have to talk about high. this because that is like that's a mental game, right? I mean, there's a skill part and then there's the mental part. So this is the third one and the fourth one. How many had you said you did? 250. Triple unders. 250 triple unders. Yeah. In one go. Okay. The international record is around 750 or something. 750. Yeah. All right. So but full day they were just doing that. Yeah, they don't have anything. So then the very fourth and main, that's my game, freestyle. Freestyle, okay. Yeah, you have to do skills in it. So you have 1 minute 15 seconds and you have to perform as much as skill you can. You can't repeat the skill. Then you have to show higher level skills because agar normal basic you'll do, you won't get points. So that's the massive one. Again, you're the only one who's doing in center. Music is playing. Everybody's watching you. Everybody's like teasing you, the opponent team. Correct. And you have to complete it. That's it. So how many skills would you pack in a minute and a half? My score is 253. 253 different skills. Skills, yeah. So what would the skills typically look like? So like if you can describe like 10 of them, like what would they? I can't describe it. So you have to see it. Obviously, I can't describe it. Okay. Backflip. With the backflip, I can do the skipping. In the front flip, I can do skipping. Handstand, I can do skipping. Push up, I can do skipping. So all these things mix and merge together to form this. Yes. So what is it? So is it skipping plus gymnastics, or is it gymnastics plus skipping? What would you think? Skipping plus gymnastics. So skipping is the main foundation that you would need for this, and then on top of that you add the gymnastics. Yes, gymnastics. So what has skipping primarily taught you? You know, when you go through this whole journey, right? Like what are the 2-3 main things that it has taught you about yourself when you've gone through this whole journey on skipping and competition? Hello everyone, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Shailesh Paul, Head, Merchant Sales and Acquiring, India and South Asia Visa. They analyze the future of contactless payments in India. On Nankari, Sadaf and Archit talk to food writer and chef Rajeshri Sen about all things sweet. On Big Talk about tiny humans, Devi Shobha and Meghna talk about how parenting can trigger past trauma. On The Longest Constitution, Priya analyzes the arbitrary arrest of several writers and artists with regards to the Information Technology Act. And on Ikka Dukka Economy, Abhinav talks to renowned economist Dr. Arun Kumar about permutations and combinations of tax alterations in India. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the Shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms that you're listening on. And you can also check us out on YouTube.
We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Capgemini, Intel vPro, and Intel. Future Bana wonderful with Intel powered laptops. So I started enjoying it बहुत ज़्यादा. I feel very relaxed. If anything happens, like thoda bura, if I'll get bad trip or BT or something we call it now. So I'll go cycling, I'll go running, I'll go skipping. Skipping is the main thing. I'll just go. You won't believe I practice around 6-7 hours. 6-7 hours? Every bus. You're just, throughout the day, you're skipping? Yeah. If I'm in some BT, I want some relaxed time. Instead of playing music and just sitting on the bed, I go, I do skipping and that's it. I feel very अच्छा एकदम, मतलब I feel fresh. That's it. फिर उसके बाद it's like running. It's like people's mind switch off. They get into their meditative state. मतलब वैसा लग रहा है. Yeah. But running में कैसा, you just have to keep doing that one thing for like जितना kilometers you're gonna run. Skipping also same one thing only, no? You have to do. No. You haven't seen my videos. Exactly. That's why. The thing is that we think about skipping as do 100 skips and start. I'm trying to like say that what is this whole world of skipping that exists that we have to understand. So there are more than 2,000 skills in skipping. And right now I can do 1,000 plus easily. So instead of running on the same road for multiple times, I'll go grab my skipping. It's a short, ज़्यादा जगह लगता नहीं है. Just put the earphones or anything you want, put it on speaker, play the music and just follow the beats and do everything. Do you know shuffle dance? Yeah. I do it in rope. Wow. The whole shuffle dance I can do it in rope. Each step with the speed. So that one video got viral. Nora Fateh का the गर्मी गाना मैंने उस पे shuffle किया था and she replied to me. Lovely. Yeah, so everything. Then the Oh Ho Ho song. So it's also dancing into this. Skipping, exactly. I saw this video of Snorip. She's an international player and she's like mentor to me. So I saw her video. She was doing shuffle and I was like, मुझे नहीं आ रहा है. मैं 3 महीना shuffle try कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है. Then फिर I texted her. She was like कि first do shuffle without rope. Because मैं starting में rope के साथ करना चालू कर दिया था, मुझे नहीं आ रहा था. So she said कि first do without rope. I was like okay cool. So मुझे 3 महीना गया shuffle सीखने के लिए, all the steps. और rope का speed तो मैं manage कर सकता हूँ because I have control my rope. बस फिर कर दिया उसको merge and it was like so good. Everybody loves it. Fantastic. Yeah. This skill, right? Like most of the things that you've done are skill oriented. That means they take a lot of practice. Yeah, right. And they take a lot of failure to get to it. True. Many people like listen to the podcast don't get skills because they get disencouraged or they get discouraged right in the beginning. How do you keep that interest going? How do you teach people skills? Because you're coaching people, right? Yeah. So how do you make sure that they still feel interested in it as they're progressing through it? So if you talk about me, then पता नहीं, it's a myth or something, I don't know. When हम लोग का बीच में एक झगड़ा हो गया था दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली के स्किपिंग लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा मैसिव झगड़ा हो गया था जहाँ पे हम लोग Thank God you learned karate then, huh? No, but हम लोग का वो स्पोर्ट्स वाला जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है. Okay. So what we did is हम लोगों ने बोला कि what we'll do one battle स्किपिंग का. एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं जहाँ पे जंपर्स वर्सेस स्किपर्स है. मुंबई इंडिया में 2 एसोसिएशन है, एक जंप रोप और एक रोप स्किपिंग. Okay. If you'll put hashtag jump rope, rope skipping वाले गाली देंगे. If you'll put hashtag rope skipping, jump rope वाले गाली देंगे. So it's like इंटरनेशनल लेवल पे दोनों मर्ज हो चुका है. पर यहाँ पे उनका एसोसिएशन पैसा कमाने ऑब्वियसली, तो दोनों एसोसिएशन अलग है अभी भी. It's the same thing but with different names or they do different things? No. Same things. Just point का थोड़ा changes है जो इंटरनेशनली हो गया था. पर यहाँ पे ये लोग का अभी भी झगड़ा चल रहा है. So it's तो कुछ कर नहीं सकते. इंडिया है. फिर हम लोगों ने इंस्टाग्राम पेज खोला जहाँ पे जंपर्स एंड स्कीपर्स. देन रूल था कि यू हैव टू पोस्ट वन स्किल एंड विद इन दैट डे दूसरे टीम ने वीडियो सेम स्किल करके डालना है और खुद का अलग से एक वीडियो भी डालना है कि वो दूसरा टीम भी कंप्लीट कर सके. तो वी स्टार्टेड दैट. 5-6 दिन हो गया है, सब एक में को कंप्लीट कर रहे हैं. एंड एक बंदे ने ऐसा किया कि रात को 11:50 को उसने वीडियो डाला एंड द रूल इज 12 बजे तक खत्म करना है. So I went in my school. वॉचमैन ने बहुत गाली दिया, but then I was like इज्जत का सवाल है, महाराष्ट्र को जिताना है, इज्जत का सवाल है. Then he was like okay ठीक है जाओ फटाफट खत्म कर लो.
देन आई वेंट इनसाइड. मैंने वो स्किल क्लियर नहीं हो रहा था मेरे से, एंड द वॉचमैन वाज देयर ओनली, क्योंकि उसको नहीं चाहिए था कि मैं इधर उधर स्कूल में कहाँ जाऊँ, तो ही वाज स्टैंडिंग ओवर देयर. मैं शूट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है. एंड दिस थिंग, मैं जाके ना उनका ऐसा पैर छुएगा, ही इज ओल्डी, तो मैं उसका पैर छुआ एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया. उसके बाद से मैंने वैसा वो पैर छूना चालू कर दिया. पता नहीं क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है हर एक स्किल. इवन जगन्नाथ मेरे से उसने जल्दी स्टार्ट किया था, लाइक 6 महीने पहले स्टार्ट किया था. तो जगन्नाथ नोज बेटर देन मी स्किपिंग का. तो ही इज़ लाइक कोच और फ्रेंड साथ में ही है. तो मैं अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं दोनों साथ में, एंड देयर इज़ वन इवेंट पेयर फ्री स्टाइल जो कॉम्पिटिशन में होता है, तो वहाँ पे दोनों का सिंक्रोनाइजेशन शुड बी देयर. दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, दोनों एक साथ अटक रहे हैं. एंड जगन्नाथ और मेरा अटकना साथ में होता है. हम लोग पूरा स्किल साथ में करेंगे और गोल्ड तो पक्का ही है, क्योंकि जगन्नाथ मेरा बीट्स बहुत अच्छा. हम लोग आँख पे पट्टी भी बांध देना तो भी दोनों साथ में करेंगे, और हमने करके देखा है वो चीज़. तो वो हो गया. फिर मेरा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आई विल जस्ट गो डाउन, आई विल टच हिज फीट, एंड देन वो स्किल क्लियर हो जाएगा. सो वो चीज़ मुझे बहुत ये रखता है कि हाँ हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं होने वाला नहीं है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट माई स्टूडेंट्स, देन उनका अभी फ़िलहाल थोड़ा ये है ना कि मतलब अटक गया तो नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोग को दूसरा स्किल सिखा देता हूँ जो उससे थोड़ा ईजी है, बट उनको लगेगा कि वो चीज़ हार्ड है. तो वो मैं बोलूँगा कि इतना हार्ड चीज़ अगर क्लियर कर लिया ये तो ईजी है, हो जाएगा ईजिली. दे गेट मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग इट. So basically you have to find that little thing that you can win at. Yes, exactly. Find something that you can win at, and then you slowly work on that hard skill, come back. I just lie थोड़ा सा कि हाँ ये easy है उससे ज़्यादा. Okay, so all the people who are students listening to this now, you know what's up. Guys, ignore. Okay, so when you were, I'm going back from karate, okay? What are the 3 things that you learned in karate that have given you a proper foundation? Because that's the first thing that you did right. with regards to this. Yeah. What did you learn in karate that gave you the foundation for all the stuff that you're doing now? The very first thing, discipline. Karate needs discipline. Without discipline, you can't do karate at all. ठीक है. Second How thing, did you learn discipline in karate? आ गया बस अपने मतलब. Did someone force it onto you? Did the teacher force it onto you? Did you? As I said earlier, Subhash sir was very brutal. He used to hit us with the rod, like iron rod. आर्चरी का जो स्टेबलाइजर करके चीज़ होता है, which stabilize the bow after shooting, जो वाइब्रेशन कंट्रोल करने वाला एक आगे रॉड रहता है उसके, वो उसको निकाल देते थे. पहले आर्चरी का क्लास होता था, फिर कराटे होता था, फिर स्किपिंग होता था. आर्चरी का क्लास खत्म हुआ, वो रॉड निकलेगा, उससे फटके वो खत्म हो गया. स्किपिंग है, स्किपिंग से फटके, तो पूरा टाइम फटके खाना ही था. तो बीच में एक पार्ट आया था जहाँ पे मुझे नहीं जाना था कराटे, मैंने बहुत मार खा लिया था. तो मैं घर पे बैठा था और पापा वेंट सुभाष सर के घर पे डायरेक्टली, एंड ही वाज लाइक वो नहीं आ रहा है. तो सुभाष सर लाइक ठीक है मैं आता हूँ घर पे. और सुभाष सर से बहुत फटती है, अभी भी फटती है. ही हैज़ दैट पर्सनैलिटी. ही इज़ द गाय हु स्टार्टेड कराटे बहुत पहले. मतलब ही इफ हिल हिट यू ऑन द नेक, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा. Oh wow. इतना ही इज वेरी बैड. वो कराटे का बादशाह. इफ विल से शोतोकान, कराटे में देयर स्टाइल, सो शोतोकान में इफ विल गो एंड से आई एम सुभाष नायर स्टूडेंट, एवरीबॉडी विल गिव यू भाव. बहुत ज़्यादा. तो हम लोग जब कॉम्पिटिशन वगैरह में भी जाते थे, तो हम लोग अगर खेल रहे और सामने वाले ने मारा जोर से और खून आया अगर मुंह से, तो देयर इज अ वार्निंग हांसुकू, वे सामने वाला ये हो जाता है. तो मैं खड़ा था वहाँ पे, मैं गलती से अंदर जाने गया और उसका लात मेरे को पॉइंट मिला, बट उसका लात मुझे लग गया था, उसका पैर मेरे मुंह पे, और वो ब्लीडिंग इधर से पूरा कट गया था. तो मैं ऐसा खड़ा हूँ और जो रेफरी था, ही केम टू मी, इज लाइक मेडिक 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 करके चिल्लाया. एंड लाइक नहीं मत बुलाओ, अगर सर ने देख लिया सर मेरे को मार डालेगा. तो ही वाज लाइक मेडिक मेडिक मेडिक. फिर बाद में वहाँ से सर आए, यहाँ से वो आया, मेडिक आया, उसने मेरे मुंह में कॉटन रखा. सर बाउट के अंदर यू कांट कम, बट सुभाष नायर. तो ही केम. क्या हुआ? बोला सर कुछ नहीं, उसने ज़बरदस्ती मुंह के अंदर कॉटन डाल दिया है. बोलता है तो तेरे को निकालना है कि नहीं? बोला हाँ सर निकाल दिया. तो बोलता है फाइट करेगा. और रेफरी ने मेरे को बोल दिया था कि यू विल विन दिस राउंड, क्योंकि उसको वार्निंग देना है हम लोग को, और वो बाहर निकल जाएगा. तो और सर को ऐसा है कि अगर जीतना है तो इज्जत से जीतना है, ये वार्निंग देने के चक्कर में नहीं पड़ना है. तो मैं बोला कि हाँ सर मुझे खेलना है. तो उसको रेफरी को हटा दिया उधर से, खुद सामने खड़े हो गए. हम लोग का फाइट चलता है अराउंड 8 मिनट तक, ठीक है. एंड 1 राउंड इज 8 मिनट. 8 मिनट्स, यस. और पहले चलता था, अभी तो इट्स 1 मिनट ओनली. और 1 मिनट तक सर्वाइव करना भी हार्ड होता है उसमें, क्योंकि कंटिन्यूस यू हैव टू प्ले.
सर ने मेरे को पॉइंट ही नहीं दे रहे सर, पूरा टाइम सर बस मेरे साथ खेल रहे, सर मेरे पास देख रहे, हंस रहे, मतलब मैं नहीं दे रहा तेरे को पॉइंट, सामने वाले को पॉइंट दे दिया। पर अभी मुझे भी जीतना है, अभी ईगो पे आ गया था बात कि जीतना ही है करके, तो मैं बस फिर, और सर का एक रूल था जो सर को उस दिन देखना था, उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि अगर तुम जीत नहीं रहे हो तो सामने वाले को नेक्स्ट राउंड खेलना नहीं आना चाहिए, उसको इतना मारो कि वो नेक्स्ट राउंड बैठ जाए नीचे, वो नहीं आए ऊपर। फिर मैं चालू हो गया, यूज दैट वन। फिर मैं बोला अभी मैं जीत तो रहा ही नहीं हूँ, तो चलो इसको भी नेक्स्ट राउंड नहीं खेलने दूंगा मैं। फिर वो हो गया, फिर मैंने 3 वार्निंग लिया, सर ने भी खुशी खुशी वार्निंग देते गए मेरे को, और लास्ट वार्निंग इज नॉकआउट वाला वार्निंग होता है। तो सर बस रुका है, जब भी वो खून आ रहा है सर मेरे को वार्निंग नहीं दे रहा है, तो मेरे को समझ गया कि नॉकआउट करना है, उसके बाद ही मेरे को वार्निंग मिलेगा और तभी मैच खत्म होने वाला है और मुझे खत्म करना है, मुझे और नहीं खेलना है। तो फिर नॉकआउट कर दिया मैंने उसको, बैठ गया नीचे। फिर सर बाहर आए, बोलते नाइस, बोला मेडल तो नहीं आया क्या, नाइस। तो सर का वही था टीचिंग मोमेंट। हाँ, तो सर मेरे को उस दिन घर पे आए, सर ने मुझे लेजिट पकड़ा, खींचते हुए क्लास लेके गए। वाओ। खींचते हुए क्लास लेके गए, फिर मेरे को मारा। फिर बोला अगली बार से अगर तू नहीं आया तो फिर मैं आ रहा हूँ तेरे को उठाने के लिए, तो बी रेडी फॉर इट, और तू फिर मार भी खाएगा, तो इट्स बेटर यू कम खुद से ही। लाइक ठीक है सर, सॉरी गलती हो गया, माफ़ कर दो। सो वहाँ से वो डिसिप्लिन आ गया, ज़बरदस्ती और थोड़ा खुद से भी। करेक्ट। फिर दूसरी बात, फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस कराटे की वजह से, एंड यू कीप वेरी काम योरसेल्फ, लाइक कुछ भी हो जाए, क्योंकि कराटे इज़ फॉर सेल्फ डिफेंस बेसिकली। तो सामने वाला जब तक हाथ नहीं उठाता आप कुछ नहीं करोगे, आप बस मुंह से बातें करते You can't hit first. एग्जैक्टली, दैट्स द रूल। तो बस वो एक चीज़ आ गया, सो दिस फोकस, फिर उसके बाद में शांति रखना, एंड देन डिसिप्लिन, 3 मेन चीज़ है। So focus, being calm throughout, and the discipline you got from the karate practice. Yes. All right, so that was our first episode with Chetan Tambe. Now, don't forget to join us for the second episode coming right up.